the arguments x0, x1, x2, xn are not necessarily equally spaced, means they may be equally spaced also. Then also you can use the same formula, and the corresponding values of fx we are considering as fx0, fx1, fx2, etc. Now we are using the divided differences. Okay, so I am considering the divided difference fx comma x0. So according to the definition, it is fx0 minus fx upon x0 minus x. But as we know that divided differences are symmetric about the arguments, we can rewrite it as fx minus fx0 upon x minus x0. Have you understood this part? See, I am marking it in red. Fx minus fx0. These both the statements are true. Okay, being a ratio, we can write it symmetrically. Now next. Okay, we had this other result. Yeah, sorry. Yeah. So now fx my comma x0 I am writing as fx minus fx0 upon x minus x0. Basically, I want to find out a polynomial fx that fits the given data. Okay. Are you getting it, girls? I want to find out the connection Yes, between ma'am. x values and y values, and I am denoting that connection by fx. So I just want to write fx in terms of the things which I know. So if you rearrange all this equation, you get fx is equal to fx naught plus x minus x naught into fx comma x naught. This is my equation number 1. Now I know what is fx naught. I have this value with me. X I will write as x only because I want to find out the connection between x and y in terms of x. So x के लिए कुछ problem नहीं है. X naught I know. What is bothering me is fx comma x naught. So I am going to express fx comma x naught in terms of the values which I know. So now I will consider Newton's divided difference with 3 arguments. Okay, initially I had considered only 2 arguments here, if you can see. See, here I had x and x naught. Now I am considering x, x naught, and the next one, that is x1, which will definitely involve this term x comma x naught. So fx comma x naught minus fx naught comma x1 upon x minus x1, and therefore I can write something for this fx comma x naught. So if you rearrange, I get this fx comma x naught is nothing but fx naught x1 plus x minus x1 fx comma x naught comma x1. So now we will substitute this in equation 1. So when you substitute this in equation 1, you get this equation 2. Okay? यहाँ तक कुछ problem है derivation में? Is there any problem so far? No, ma'am. No. Now what is the next? What should be the next one? You can find out these differences you have in the table. X will remain as x. Okay, we want to substitute this in equation 2. तो मैंने आपको कहा था कि substitute करके रखो. आपने किया क्या? सब्स्टिट्यूट करके मुझे बताओ. हाँ, तो ये अभी आपको सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे. ओके, कौन से इक्वेशन में? यहाँ पे. सॉरी, ये आपने किया सब्स्टिट्यूट, फिर आपको ये मिला. यस, यहां तक हमने किया था. इसके बाद किया आपने गर्ल्स, ये वाला जो इक्वेशन है ये मैंने सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे और मुझे मिला ये. देखो कैसे प्रोग्रेस हो रहा है. इट स्टार्ट्स विथ एफ एक्स नॉट, देन वी हैव वन ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स नॉट, देन वी हैव first order divided difference f x naught x1, then we have two brackets. And what is bothering to us now? This one, f x comma x naught comma x1. तो इसके लिए हमने फिर से क्या लिया? अभी 4 आर्ग्यूमेंट्स लिए एट अ टाइम. x के साथ x नॉट x1 x2 लिया, फिर हमें इसकी वैल्यू मिल रही है x कॉमा x नॉट कॉमा x1. तो ये वैल्यू मैंने आपको कहा था, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन 2 में. तो हमें क्या मिलना चाहिए अभी? कैन यू टेल मी व्हाट शुड वी गेट? हैज एनीवन डन इट?
Yes, ma'am. Fx naught, f of x naught. The first term is fx naught, then x minus x naught, fx naught comma x1. Okay, fx naught plus x minus x naught into f x naught comma x1, right? x1 प्लस अभी क्या plus है? x minus x naught. हाँ, अभी ये सारा भर सब्स्टिट्यूट करना है मुझे इसकी जगह पे, है ना? तो पहले तो मैं ये ब्रैकेट लिखती हूँ, x माइनस एक्स नॉट into x minus x1 and okay, should I write this in the next line? Plus x minus x naught into x minus x1 and into we have this thing, into we have this whole part. Okay, x comma x naught comma x1, तो ये क्या है? x naught x1 x2. Okay, it is f x naught x1 x2 plus x minus x2 into f x comma x naught x1 x2. करेक्ट है क्या देवश्री? देवश्री Yes, ma'am. Yes. so this will become fx naught plus x minus x naught f x naught comma x1 plus अभी इसका मल्टीप्लीकेशन अंदर होगा, so this will become x minus x naught x minus x1 f x naught comma x1 comma x2 plus x minus x naught x minus x1 x minus x2 f x comma x naught comma x1 comma x2. करेक्ट है? इतना आया है हमारा. This may be equation number 3. Have you understood so far? And can you guess what will happen further? Now what should I do next? बोलो आगे क्या करूं? गर्ल्स आगे क्या करूं बोलो? आगे क्या होना चाहिए बताओ? ये प्रॉब्लमेटिक है ना? यहां तक कुछ प्रॉब्लम है क्या? इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल दिस टर्म? This you know from the table? Please answer my questions. If you don't answer, how I will understand you are there or not? Do you hear me? Riddhi, do you hear me? I'm Yes, audible. ma'am. Please answer my questions. So you know fx, you know what is x minus x naught. X will remain as x. Okay, unless and until you feel the value in place of x. Then you can calculate first divided difference fx naught comma x1. Then you know what are these brackets. Then you know what is second divided difference. This is second divided difference. Now what is bothering you is this, right? तो इसके लिए आप क्या करोगे? What you should consider next? You can consider fx comma x naught x1 x2 x3, right? X3. Yes, and you can rewrite the formula, but we are not going into that now. Can we generalize it? Can we generalize it? Now, ऐसे ही एक्सटेंड होता जाएगा और लास्ट में हमारे पास क्या रहेगा वो देखते हैं. Have you understood it so far? Everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, now we will proceed in the same way, right? Continuing in the same way. We get what you get. Fx is equal to fx naught plus x minus x naught
f x naught comma x1 plus x minus x naught x minus x1 f x naught comma x1 comma x2. Can you tell me the next term? We are going to substitute something for this, right? So this will give you two more terms. मतलब ये जो एक टर्म है पूरी, इससे हमें दो टर्म्स मिलेंगी. तो इसकी नेक्स्ट टर्म बता सकते हो क्या मुझे आप? क्या होनी चाहिए नेक्स्ट टर्म? यहाँ पे देखो, पहले सिर्फ एफ एक्स नॉट है, फिर एक ब्रैकेट आ गया एंड फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आ गया, दो ब्रैकेट्स आ गए, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस आ गया. तो अभी कितने ब्रैकेट्स आने चाहिए? ये तीन ना, राइट? 3 brackets. So x minus x naught, x minus x1, x minus x2 into f of x naught, x1, x2, x3 भी आएगा एंड प्लस वो रिमाइंडर वाली टर्म आएगी एक, जैसे यहाँ पे आ रही है. ओके, बट नाउ वी विल राइट, सी व्हाट आई एम राइटिंग. ऐसे हम n तक जाएंगे तो हमारे पास लास्ट में भी वो दो टर्म्स रहेंगी, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1 अप टू, देखो यहाँ पे आपके पास x नॉट है, x1 है, x2 है, तीन ब्रैकेट्स है, तब आपके आर्ग्यूमेंट्स कहाँ तक जा रहे हैं? 3 तक. डिवाइडेड डिफरेंसेस कहाँ तक जा रहे हैं? 3 तक. जब आपके पास यहाँ पे एक ब्रैकेट है x नॉट, x माइनस x नॉट, you are taking divided difference up to x1. When you have two brackets, you have up to 2. When you have 3 brackets, यहाँ पे तो 3 है, तो यहाँ पे आपके पास, आप कहाँ तक जाओगे लास्ट बताओ मुझे? x माइनस क्या होना चाहिए? xn. Should it be xn, Devashri? We are starting from x0. We should have n brackets, right? n minus यहाँ पे 3 brackets है और 3 तक जा रहा है. So it should be n minus 1 here, and here it should be x naught, x1, x2 up to xn. प्लस एक रिमाइंडर वाली टर्म आएगी जो हमेशा आ रही है, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1 अप टू x माइनस xn minus 1 into f of, now it is what? See, x comma x naught comma x1 comma up to xn. Now can you tell me what should happen with this last term? ये जो लास्ट टर्म है ये क्या है बताओ मुझे. पहले n ब्रैकेट है वो छोड़ दो. हाउ विल यू इंटरप्रेट और हाउ विल यू डिस्क्राइब दिस पर्टिकुलर डिफरेंस एफ एक्स कॉमा एक्स नॉट कॉमा x1 कॉमा xn? इसका क्या करें हम? हैव यू रिटन एवरीथिंग? हैव यू रिटन दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो लास्ट टर्म मुझे बताओ, मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं क्या, और यू वांट टू राइट इट? Can I go to the next page? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. See, just tell me what is this? You have suppose x naught, x1, x2, x3. तो आप कितने डिवाइडेड डिफरेंसेस आप ढूंढ सकते हो? कौन सी ऑर्डर तक? दिस इज f of x naught, x1, राइट? पहला. फिर होगा f of x1, x2. फिर होगा f of x2, x3, राइट? यहाँ पे क्या होगा? f of x naught, x1, x2.
ये क्या होगा, f of x1, x2, x3 and blanks. ये क्या होगा, what should be the last one? x0, x1, x2, x3. Correct. So when you have 4 values, right? You have 4 values here. Okay? Right? But when I write, I have n plus 1 values. Right now we are considering x0, x1 up to xn. और हमारी जो ये लास्ट टर्म है, देखो ये लास्ट टर्म x कॉमा से लेके ये आ रही है. सो लास्ट टर्म है हमारी x कॉमा x0 कॉमा x1 अप टू xn. तो कितने आर्ग्यूमेंट्स हो गए बताओ मुझे. हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स आर देयर हियर. +1. हाँ, n plus, n+1. is it n plus 1? Just check it carefully. Is it n plus 1? ये ही n plus 1 हो गए ना. ये x0, x1 अप टू xn यही n plus 1 हुए एंड प्लस दिस वन x. तो कितने हुए टोटल. n+2. n+2. राइट. और हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स कितने थे, इतने थे. n plus 1 आर्ग्यूमेंट्स थे हमारे पास. हाँ, तो हम कितने ऑर्डर के डिफरेंसेस, मैक्सिमम हमारे डिफरेंस का ऑर्डर क्या हो सकता है, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस के ऑर्डर. मैक्सिमम वी कैन फाइंड x0, x1 अप टू xn, जैसे हमने यहाँ पे ढूंढा. देखो है कि नहीं. आर यू गेटिंग इट. लेकिन ये जो है, दिस इज nth ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस. This is nth order divided difference which contains n plus 1 arguments. These are n plus 1 arguments. But these are n plus 2 arguments and therefore this becomes n plus 1th order divided difference. Right? This is n plus 1th order. तो आपके पास अगर n plus 1 arguments है तो आप ज्यादा से ज्यादा कौन सी ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस ढूंढ सकते हो, nth ऑर्डर का. So therefore this term vanishes actually. ये जो last term है, this term vanishes, the star term. Do you understand it? This is a remainder term. This should vanish. Are you getting the point? No one is saying yes. Yes, ma'am. No. Huh? लिखो. The last term is the remainder उसे इक्वेशन नंबर डालो रे कुछ. ये जो है इसे इक्वेशन नंबर डालो. ये जो लास्ट रेड में लिखा है ये पूरा, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4. Just a minute, girls. Can you show the Just a minute, yeah. previous page? Yes, finished writing, Riona? Ma'am, the next page, ma'am, the table page. Ma'am, where you made the table, ma'am, this I wrote, ma'am, the next page. Yes, ma'am. What? You haven't understood this? No, ma'am, I have to try last time.
Ma'am, you can use next. The last term is the remainder after n plus 1 terms. Since the function is a polynomial, of nth degree, then the divided difference f x comma x naught comma x1 comma x2 up to xn. Okay, polynomial is of nth degree, so you can expect the divided differences only up to order nth, only up to order n. You cannot have n plus 1th order divided difference using n plus 1 arguments. Okay, that is what we want to say. So this vanishes actually. Hence, Newton's divided difference interpolation formula can be written as fx is equal to fx naught plus x minus x naught. This is very easy to remember again, like Newton's forward or backward, you can remember it. Fx naught plus x minus x naught f x naught x1 plus next term क्या होगी, 2 brackets and 3 arguments x naught x1 x2. Okay, then can you tell me the next term? X minus X naught. X. Yes, x minus x naught, x minus x1, x minus X2. into f of Fx naught. x2 X1. X naught. X1. X2. X3. plus up to last term would be x minus x naught, x minus x1 up to x minus xn minus 1. Excuse me, ma'am. Yes, Ma'am, there it should be f of x comma x naught comma x1 where? for the I think third term. Which term? x Third comma term. x1 नहीं रहता है सिद्धिता. We are removing that fx Ma'am, comma x x comma x naught comma. no, we are removing that x comma x naught thing from everywhere. Siddhita, Ma'am? Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. हाँ बोलो. Ma'am, in the last page, like the remainder, ma'am, where we've written the remainder in the